that will be the drivers for our industries in the days to come. And along with that, the regulatory support that you require from us, because we must behave as partners in your progress, not as regulators, but as facilitators, to make sure that we create a win-win, not only for you, but for Mother India in the days to come. Thank you very much for having me. And as we take that pledge today, that pledge of an Atmanirbhar Bharat as coined by our Prime Minister, a self-reliant India, an India that stands on her strength. As we take that pledge today, we must deliberate on the future of our sectors to align with that vision, the vision of India at 2047 and the vision of India at 100 from her journey from today of India at 75. And as we walk down that path, ladies and gentlemen, we must reflect on the recent past. The last 8 years that have seen a tectonic shift in the way that government conducts itself, in the way that government commits itself, in the way that government aligns itself, in the way that government today works as a partner with all of you, with the common goal of making sure that India's economic power grows forward from here till our destined future. And in the last 8 years, especially in our sector, we have seen unprecedented, transformative reforms take place. And these reforms have created sustainable opportunities for new investments, both in the mining sector, in the metal sector, in the steel sector, in the infrastructure sector. And the focus of these reforms has been to unleash our indomitable spirit, focusing really on 3 sectors. The first, increasing mineral production and time-based operationalization of our mines. The second, increasing employment through increased investment in our sectors. And the third, through that new investment, through that new employment, really increasing production in all our sectors. My esteemed senior members of industry, both from the mines and minerals sector as well as the steel sector, ladies and gentlemen, I must start with a comment that it is indeed refreshing to see a person from the FMCG sector talking about the mines and minerals and steel sector that we've seen in the form of Sanjeev Mehta. Shows the true diversity of India's corporate sector, and the fact that he waxed so eloquent about our sector shows the grit and determination in his new avatar as the president of FICCI that he takes on for the whole of industry in India to further our growth rate in the years to come. So we are in the month of August. And the month of August has huge portents for us. It's a very auspicious month. The month that we have this year celebrated our Azadi Ka Amrit Mahotsav. 75 years of attaining independence. 75 years of both growth and glory. 75 years of
India seeking her rightful place in the Comity of Nations. And as we celebrate her journey, and as we celebrate our journey in that quest, we must also take the pledge for the onward journey from Amrit Kal to Shatabdi Kal, the next 25 years, that must herald India's emergence as a superpower on the world stage. India's emergence as a healing power on the world stage. India's emergence as both a hard economic power and, in her true spirit, her soft power across the world. Detailed discussion in coming 2 days to have the further detailed discussion, एक अच्छा सा चिंतन करके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर अमल निकल के आएगा। ये मेरा सोच के साथ मैं आपके सामने कुछ चीज रखना चाहता हूँ। It is a very joyous moment that this is happening with all eminent people of the sector participating here when India is celebrating its 75th year of India's independence. At the very outset, I would like to tell you, जैसे श्री इंडिया ने जिक्र किया, कोल गैसिफिकेशन के बारे में भी हमको इधर चर्चा करना चाहिए। Recently we have approved the policy, जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हमने जो अपनाया है, उसमें 50% डिस्काउंट देने का निर्णय हमने कर लिया है और कई लोगों को ऑलरेडी लाभ पहुंचना शुरू भी हो गया है। लास्ट मंथ we have approved it, and before that it was 50%. Demand of the sector was that we should go for the 50%. We have made it 50% because we know our कोल का जो एज कंटेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो क्वालिटी का कुकिंग कोल का जो इशू है, कुकिंग कोल का भी हम ऑप्शन में लगाया है। कमर्शियल कोल माइनिंग, मैं other days in some coal conference I was telling, when I started talking about the commercial coal mining, then people used to advise me, commercial coal mining करके बात मत करो, स्ट्राइक वगैरह हो जाएगा और जो प्रोडक्शन है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, 46 commercial coal blocks are in auction and some of them have started in production, and this year we will end up with at least between 5 to 10 million ton production. We will get it from the commercial coal mining, which is a very good achievement, and by 2030 I think with at least 70-80 million tons of commercial coal through commercial coal mining we will get the coal, and that is a very big achievement. And out of that there are very good coal mines where there is a very high grade coal is available. The coking coal is also there. तो इसलिए इसके बारे में भी आप सोचिए, अगर आपका कुछ सजेशन है तो कृपया आपको दीजिए। I am open for suggestion because when I joined, I was not knowing much about the both coal and mine. I was little knowing about the parliamentary affairs because it is a more related to political thing. But after speaking to you people, we have got a lot of changes. So by that, our coal production has increased, and even in last 4 months, the record coal production in the country, and I am quite confident this year we will end up with the 900 million tons of the coal domestic coal production. तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि how can we
the ash segment and other things, and हमने ये भी किया है जैसे PLI स्कीम अदर सेक्टर में किया है, कुल गैसिफिकेशन में भी एक PLI स्कीम हमने अनाउंस किया है, उसमें प्राइवेट लोगों को भी लाने के लिए हमारा कोशिश चल रहा है। इसीलिए आपका सहयोग इस क्षेत्र में इसमें आगे बढ़ने के लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a call for the nation to come together and participate in the grand celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav to commemorate 75th year of India's independence. During the last week address to the nation from the Red Fort, Modi ji said, by 100 years of independence, we have to work with the vision of accomplishing what our freedom fighters dreamt of. Speaking on Panch Pran, he has urged that we need to now move with a renowned focus and resolve for the next 25 years. The next 25 years, whatever we need for the country, as far as our metal industry is concerned and mining industry is concerned, हम एक पूरा डिटेल में प्लान वर्कआउट करना चाहिए, ईयर बाय ईयर हमारा अचीवमेंट क्या रहना चाहिए, अब सरकार से आप क्या चाहते हैं ये हमको बताइए। दिस गवर्नमेंट बिलीव्स इन आवर एंटरप्रेन्योर्स एंड आवर इंडस्ट्रियलिस्ट। पहले एक जमाना था, आप सब जानते हो, इंडस्ट्री के बारे में बात करना, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करना, बिजनेसमैन के बात करना थोड़ा डर लगता था। कभी कभी ऐसा भी बोल जाता था कि ये गरीब के विरोधी है। अगर कुछ इंडस्ट्री अच्छा चले तो तब हमको रेवेन्यू मिलेगा, जब रेवेन्यू मिलेगा तब भी हम गरीब लोगों का कुछ सेवा कर सकते हैं। We can make use of the revenue in the service of poor people. That's why this government has full trust in our businessmen and industrialists, and you should see that आप अच्छा बिजनेस करें और देश का रेवेन्यू बढ़े और देश का गरीबी को सेवा हम कर सके, यही हमारा स्पष्ट सोच है, इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारा माइनिंग, एज फार एज माइनिंग इज कंसर्न, हमने बहुत बड़ा बदलाव भी लाया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं रत्न गर्भा वसुंधरा, इस गर्भ में, भूमाता के गर्भ में रत्न गर्भा, इस गर्भ में रत्न वगैरह सब कुछ है। तो हाउ टू ब्रिंग इट आउट एंड मेक द कंट्री टू प्रॉस्पर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो। This is a balancing act. So how to do it? That suggestion, that thinking we should have, and it is with the same vision we are working for the India's minerals and the metal industries transition towards 2047. In the last 8 years, we have laid the foundation of Atmanirbhar metal and mining industry. Several initiatives have been taken in consultation with the industry to boost the ease of doing the business in this sector. Understanding the need to reform in the mining sector, our preparation began way back in 2015 with the amendment of MMDR Act. Introduction of auction-only the regime to make the mineral blocks available to the industry, and we started the introduction of revenue sharing model. This has brought lot of changes. एंड पहले ये भी होता था कैप्टिव, नॉन कैप्टिव, रिस्ट्रिक्शन, एंड यूज रिस्ट्रिक्शन, कोल में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन था, इसके लिए उपयोग करो, इसके लिए उपयोग करो, रेल मोड, रेड मोड, ये सब मोड। तो इससे हमारा जो नीचे लेवल का अधिकारी है वो भी इसका डिस्क्रिप्शन का बहुत उपयोग करते थे, इसलिए डिस्क्रिप्शन खत्म करने का एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे दोनों मिनिस्ट्री में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिया है। अभी कुछ एंड यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूवल ऑफ एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड द मर्चेंट माइंस, द अमेंडमेंट ऑफ MMDR एक्ट मैंडेट द ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक विदाउट एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। Auction and allocation letters have been given, necessary harmonizations have been done, and that way spectrum part is now complete. The second big thing regarding 5G rollout is getting the ROW permissions for new poles, new towers, for laying new fiber. As all of us know, 5G में जो required number of towers, number of poles
फाइबर, नंबर ऑफ किलोमीटर्स फॉर फाइबर, बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें इंडस्ट्री को बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा हम सब जानते हैं, वी ऑल नो इट। उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए करीब 3-4 महीने पहले मई में हमने ROW पोर्टल लॉन्च किया था। जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं उनको आप एक सिस्टमेटिक, एक इंटीग्रेटेड वे में करो। तो उसी हिसाब से एक ROW पोर्टल बनाया था। तब लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, कुछ स्टेट्स तब भी ऐसे थे जो कि ROW पोर्टल से नहीं जुड़े थे। Some of the states had still not joined. I'm very happy to share with all of you that today all the states in the country and all major infrastructure departments like railway, highway, power, all the major infrastructure sectors, ministries and the states have joined the portal. So I must congratulate all the states and all other stakeholders for excellent cooperation they are giving to this journey of Digital India through 5G. That's the first point I would like to make. The second point I would like to make is, जब हमने ये प्रयास चालू किया ROW को एकदम सिंप्लीफाई करना है, किस तरह से राइट ऑफ वे जल्दी से जल्दी मिले, परमिशंस जल्दी से जल्दी मिले, स्टेट्स में थोड़ा सा अप डाउन था कि कोई कहता था कि नहीं इतना कम क्यों करें या इतना बढ़ाएं, या फिर बैंक गारंटी कितनी होनी चाहिए, बीजी कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल आ रहे थे। लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक्सीलेंट एग्जांपल है, हर एक स्टेट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन करने के बाद में करीब करीब सभी स्टेट्स का पॉलिसी अलाइनमेंट भी अब हो गया। तो अब आज जो रूल्स लॉन्च किए हैं आप सबके सामने, उन रूल्स में 3 फंडामेंटल चीजें। पहला, ज्यादातर चीजों का बहुत बड़ी बात है, आप सोचिए इसका इम्पैक्ट देखिए। आप इन सब रिफॉर्म्स का, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, इनका इम्पैक्ट देखिए आप। पहले ऑन एन एवरेज 343 डेज लगते थे अप्रूवल्स के, किसी भी ROW, टेलीकॉम टावर, इन सब के अप्रूवल्स के। वो आज करीब करीब 22 दिन आ गया। 343 से इट हैज कम डाउन टू 22 डेज। अभी जुलाई में तो इनफैक्ट लास्ट जुलाई द एवरेज इज इवन बेटर, 16 days. 16 days is the average in the month of July. Imagine 343 days से 16 days. ये PM साहब के, प्रधानमंत्री जी के जो रिफॉर्म्स है उसका आपके सामने क्लियर इम्पैक्ट है। तो इस तरह से सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स जो कर रहे हैं, उसमें स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए, और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं, और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग। एंड उसके बाद में बहुत रैपिड स्केल अप करेंगे, बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को, और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। तो ये जर्नी है, आप सब ने अब तक बहुत सहयोग दिया है। आई थैंक ऑल द फ्रेंड्स इन मीडिया, आई थैंक द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, आई थैंक द स्टेट गवर्नमेंट्स, आई थैंक ऑल द टीम मेंबर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की entire team has worked day and night very diligently, done very good work, and most important in a very collaborative manner state governments के साथ बातचीत करके जो solution आज लाए, मुझे आशा है इस सब से हमारी 5G की जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। एक्शन लेने के लिए जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे मान लीजिए पोल है, उस पोल को लगाने की परमिशन चाहिए, उस कॉस्ट में एक मैक्सिमम सीलिंग लगा दी है। स्टेट गवर्नमेंट्स उससे कम ही अप्लाई कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। और ये सीलिंग भी बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट पे लगाई गई है। जैसे मान लीजिए
एक स्मॉल सेल का टावर लगाना है, टावर क्या पोल लगाना है, उसमें 8 मीटर से कम हाइट को पोल की तरह डिफाइन किया है। तो अब उसमें जो मैक्सिमम चार्ज किया जा सकता है वो है 500 रुपीज ना 400 रुपीज, कितना? स्मॉल सेल 300, हाँ, स्मॉल सेल के लिए केवल 300 रुपीज पर एनम, राइट। ये बहुत ही एक रीजनेबल अमाउंट है जिसपे सभी राज्य सरकारों की तरफ से भी सहमति आ गई है, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑन बोर्ड विद अस, दे आर थिंकिंग अलाइक विद अस। फिर जैसे नया केबल लगाना है स्ट्रीट फर्नीचर पे, स्ट्रीट फर्नीचर का जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए, आपके दूसरे कहीं पे बाउंड्री वॉल्स हो गई, इस तरह की स्ट्रीट से रिलेटेड जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर लगाओ तो उसमें मैक्सिमम 100 रुपीज पर एनम पर स्ट्रीट फर्नीचर। इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट से, कई सारी आप देखेंगे जब ये नोटिफिकेशन आप एकदम क्लियर एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही इजी टू रीड है, आप यूज कर सकते हैं उसका। तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट्स आ गए। So that is the second point I want to make, that all the state governments have today aligned their policy except a couple of differences जो कि बहुत जल्दी थ्रैश आउट हो जाएंगे डिस्कशंस के जरिए से। करीब करीब सभी जगह पॉलिसी का अलाइनमेंट भी हो गया। फर्स्ट पॉइंट वाज सभी के सभी स्टेट्स आ गए ROW पोर्टल में। सेकंड पॉइंट है बहुत ही रीजनेबल रेट्स सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अग्री कर लिया है 5G के रोल आउट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एंटायर जर्नी इज, अब हमको जब तेजी से आगे जाना है तो प्रोसेस को कैसे हम स्पीड अप करें। करीब करीब 17 या 14 स्टेट गवर्नमेंट्स की जो डीम्ड अप्रूवल का करीब 17 states have agreed to the deemed approval कंस्ट्रक्ट, यानी आपने संचार सरल संचार में और पीएम गति शक्ति ROW पोर्टल में एप्लीकेशन डाली और तुरंत उसमें ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाए। ज्यादातर एजुकेशन विद लाइवलीहुड rather than a mere degree. I was very fondly listening to what Mr. Multani said, that we have so many degree holders across the world. Rather, I would say we have the maximum number in the world. But is that something to feel flattered about? About 4 years back, I was sitting with the Vice Chancellor of the Cambridge University because he happens to be a teacher of microbiology. He's a medico. He's an octogenarian, past 80. In UK, teachers don't retire. They carry on as long as. So also the attorneys. I think that is one improvisation which might happen in this policy as we move on. The initiation has been done. So being a medico, whenever he's in India, he calls for me. In the course of conversation, he said, "Doc, I must tell you, if I didn't have students from India, my university would be closed." And then he went on to explain all my PhDs from India. So was Mr. Multani taking pride over it. So when he went out, I was sitting with another colleague of mine. I said, "What was this that the gentleman said? What's a compliment or otherwise?" He said, "What do you mean?" I said, "The British gentleman does not understand that a British boy or a girl will go in for PhD only if he or she has decided to put in the rest of the life into that. And to arrive to some logical conclusion, if not, then to leave a legacy for the next generation of researchers or workers to follow. Here, an Indian goes to get a PhD as a trophy. And I have ample number of examples I can tell you in privacy among my own contemporaries. They have done a degree, a doctorate in biotechnology and come back to become MD in a computer company. And no problem about it. It's a win-win situation. The proprietor of the company during the morning walk
takes pleasure in telling his fellow workers, आपको पता है मैंने कैम्ब्रिज का PhD रख लिया अपना मैनेजर, and manager is happy as long as spouse is happy that he's getting a fat pay packet. So such a huge mismatch. I hope this education policy which I could share to you also, if you don't know that I have been myself a teacher for more than quarter of a century, a teacher of medicine. And therefore, I justified that to myself without being able to make out what had struck the organizer's mind. Now, as far as the national or the new education policy, which is actually the National Education Policy 2020, NEP 2020, where the student society have learned to be specific to the subject and just talking about that. I think in the brief, if you ask me, India had been actually waiting for long for this revisit of the education policy to happen. And to that extent, we owe it to the conviction and the courage of Honorable Prime Minister that he took up this initiative. Broadly speaking, this NEP 2020 seeks to address issues at 4 levels. A, rectify many of those anomalies which had existed over the past, which through this policy are being sought to be rectified, if not wholly, at least to a very large extent, and that will pave the way for further rectification if required. The simplest example is the nomenclature itself. We called it HRD. I have been associated with the private sector and been on the advisory of many MNCs. HRD means management. In government circles, this is DOPT. In states, this is GAD. There's something to do with administration management, is far from what is education dealing with. And in fact, at the time of independence, the ministry itself was known as education. And this nomenclature, which is quite confusing, I know what had prompted this change, which took place somewhere in 1980s, has been rectified. Second, to reorient India's education system to the global benchmarks. Sudhanshu was referring to India's capacity to have the maximum literacy rate in the world, which has been part of legacy, as he cited beautifully. And therefore, if we have to again reach that, we have to have those, we have to live up to those benchmarks, because if India in the year was living up to that standards, it was also actually living up to the universal standards that were expected of it. Third, to link, correct that. And the fourth level is the quality control, which somewhere midway we had possibly inadvertently lost track of giving due attention. When we talk of so many thousand PhDs, actually what happened at the time of independence, the immediate concern was the accessibility of education. We cannot have any policy consistently prevalent for all times to come, and that applies equally well to every stream of work or every stream of planning. In 1947, you just had 5 or 6 universities. In the pre-independence era, you had Calcutta University, you had Patna, then Madras, of course, was there because the Britishers came that way, as Trivedi was beautifully mentioned. They landed at the East Coast, set up Calcutta Presidency College, Calcutta University, and the first medical college of India, which is now known as Poli. Then they travelled southwards, set up Madras University, Madras Medical College, and Madras University. So even JNU and other things came much later, because they came to North much later. And the major university catering to all these 4 or 5 present states was the Punjab University, with the headquarters in Lahore. And only privileged few had the opportunity to go for a graduation. Even in a place like Delhi, some of the earlier generation graduates were from Lahore, whether it was Mr. Khushwant Singh, Mr. Varaj Sani, whoever. In fact, when Atalji went to Lahore, one of the reasons he took Devanand along with him was that he was also an alumni of Government College Lahore.
So the immediate concern, and I don't write that rightly so, to make it accessible so that those who could get education and could also have the capability of education would not be deprived. So somewhere in 1955, in the second plan, you had this stream of regional engineering colleges, which is now known as NITs. Then you had these 5 IITs. Now, of course, that is diluted. So that was accessibility, which was degree colleges not available. But then somewhere the consideration of having new institutions was not purely based on merit. I'm not going to the extraneous factors because even my community may be responsible for that, for whatever consideration. So we had a mushrooming of institutions with not enough of attention to the quality control of it. And that is, I think, these 4 aspects are what the NEP 2020 seeks to address, may not be to the conclusion immediately, but it paves the way for that. And as I said, delinking with degree, it also seeks to give weightage to aptitude, to skill, to your inherent talents, because that was the casualty. When you were a topper in IIT and ended up becoming a babu as a civil servant. If you do a survey of the civil service, every batch has almost 70% who are the toppers from the IITians. So what is the pride of having that IIT degree? So I think we somehow lost the track of the fundamentals and got carried away by the ornamentation. And thanks to Prime Minister, he brought back to focus during his Independence Day address in 2015. He said, "Startup India, Stand Up India." And I know the same day many people were asking me, what does it mean? It was such an alien. And the result of this is that before 2014, before this government came in, India had just about 350 startups. Today we have more than 75,000 and more than 100 unicorns. And India's startup ecosystem ranks 3rd in the world. And even in a sector like biotechnology, which was hardly known, we had just 50 startups before 2014. Today we have more than 5,000. When we talk of Amrit Kaal, we forget that what are the new sectors which are going to add value to this Amrit Kaal. How is India going to become a world economy? It's going to become on the strength of those sectors and those resources which remain unexplored. One of them is the biotechnology. We have a huge biodiversity source. We have a huge agriculture sector. We don't talk of that because when we talk of startups, we talk of IT. That is fixed in our mind. But there's something called agri-tech startup. And that is exclusive to India. And the bioeconomy of India before 2014 was just about $10 million. Today is $80 million. And the projections indicate that it will be $150 million by 2025. That is the kind of push given by this government headed by Prime Minister Modi. And as I said, for the next 25 years, we have to look at these sectors which are not looked at. Ocean. We have 7,500 long kilometer coastal area, longer than ocean named. Why so? वो प्राचीन काल की बात बता रहे थे सदाशिव, शायद उसी दौर में जबकि वो बात कर रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कहीं उनको ये अनुमान हुआ होगा कि इसके अंदर कितने हीरे जवाहरात. The future economy, the minerals, the mines, the living and non-living resources under the seabed are the huge, the largest in India, which have remained totally, it's now only, again, you heard, Prime Minister said Deep Ocean Mission and made it a flagship program. So these are the new areas to which this direction will give. And when we talk of science, technology, of course, our entire education system and technology is virtually entered in the Indian household. So what is it? It is science plus technology enriched by innovation. That is what makes the composition or recipe of a startup. And innovation is a constant process. And for innovation, you need to have creativity. And for creativity, you need to have mentoring of your inherent talents, which sometimes got messed up in the earlier policy that we were following. As Francis Bacon once read,
The greatest harm to the cause of literature is done by the teachers of English literature, when they expect their students to mug up lines from Shakespeare in dingy, dark classrooms and repeat them. So if you are not able to, and that's why we have actually initiated a program in our ministry, which I thought was important, to catch them young at the time of 10, 12. Because after class 12, the first culprit is the parent. In the morning walk, वो कहता है कि मैंने आदर्श में डाल दिया, आपने कहाँ डाला? And हमको परेशानी बन गई. And I see so many, parents asking for a hostel accommodation. Admission तो हो गया, hostel नहीं मिला. But if you do, I said you do a survey. We did that. If you do it for the last 10 years, most of those who have made it from the civil services are from the Navodaya Vidyalaya, from the Kendriya Vidyalaya. Hardly few of them from these high profile. And that's because you are not actually allowing the child to grow by its aptitude. You are not also, because the child sometimes may not be aware of what he actually is meant for. And that's where a mentorship is required. So we have introduced a mentorship program. We've identified a couple of colleges. I hope to do more of them. A mentor is the one who has to identify what is it, because parents would not do. Parents would some translators, particularly for the science stream. About 6 years back, there was a protest going on by the civil services candidates who had not waited. Early, to begin with, I didn't take it seriously because every year after the result is over, those who don't make it sit on protest. There's a permanent tent outside UPSC office. The person doesn't even charge money. वो कहता कोई नहीं बैठना, जिसने बैठा हो किसी को दे देंगे. So I didn't take it. ऐसे मैंने कहा यार ये हर साल होता है, जो फेल हो गए वो हड़ताल पे रहते, 2-4 दिन हमारा पुतला भी जला लेते हैं, फिर चले जाते हैं. But then somebody said, no, so I want to, and the third person said, there's a point that I want to bring to your notice. He said, what? He said, they are saying that the translation, I myself went through that. The translation into Hindi of the steel plant was लोहे का पौधा. तो ट्रांसलेशन करने वाले ने बड़ी ईमानदारी से ट्रांसलेट किया था. लोहा भी है, पौधा भी है. लेकिन that goes to the disadvantage of the candidate. So for that we need to have, I'm glad some of the states like Madhya Pradesh have already introduced Hindi medium in some of the engineering colleges. So that is one challenge that we will face when we talk of vernaculars. Otherwise, talent is equally accomplishable. About a few years back, we had a 4th topper who had done his entire graduation in Telugu. So I asked him why so. He said, because I knew graduation was the minimum qualification for civil services. I didn't have access to that. I come from a village. My mother is a housemaid. I had to walk a considerable distance to reach a small township where there was college, and it was only Telugu medium. So the urge is also there. Only thing, the providers, we have to. And that too, when we talk of Amrit Kal, these is the section of population, those in their 30s, in their 20s, who are going to put in active energy for the next 25 years before India turns 100. And so what is our role? Our role is to provide capacity, to provide that kind of milieu, so that when these youngsters today reach 2047 and they have the privilege of being known as the architects of Century India, architects for 2047, we might have the satisfaction of having done justice to their capacity building. If that is achieved, I think, if not wholly, even if you are moving in that direction, that would be the success of the NEP 2020. Thank you. Next. Thank you very much, sir, with your motivating speech. And बेरोजगारी का डर ये बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है. और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है. बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं.
अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों की जेब से पैसा निकाला, गरीबों को कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, और फिर कुछ ही महीनों बाद आपने देखा कि जो आपके जेब में से पैसा निकाला गया था, लाखों करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसान के खिलाफ 3 काले कानून लाएंगे, कहेंगे कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। अगर किसानों के फायदे के लिए है तो फिर पूरे देश में किसान क्यों खड़ा है, सड़कों पे क्यों उतरा है और आपके खिलाफ क्यों खड़ा है? पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं 2 उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है, जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना।
देश की आत्मा है। आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। क्योंकि ये देश संविधान है, ये देश इस देश की जनता की आवाज है, ये देश इस देश की जनता का भविष्य है। ये देश दो उद्योगपतियों का नहीं है, ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है। नागरिकगण, युवा साथीगण, भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, समाज जीवन में कोई भी अच्छी पहल का समर्थन करनी चाहिए। समय बदल रहा है, समाज की स्वभाव और चरित्र उस हिसाब से भी बदलते हैं। समाज में गपशप होनी चाहिए, मिलना जुलना होनी चाहिए, तब उसको एक जीवंत समाज माना जाता है। संवाद एक तरफा नहीं होनी चाहिए, संवाद दो तरफा होनी चाहिए, तब जाके संवाद में से ही कुछ अमूल्य निकलता है, कुछ लोक उपदय, लोक लाभ की, लोक हित की बात भी निकलती है। शशांक मणि जी ने आज से 25 साल पहले, जब वो युवा रहे होंगे, अभी भी युवा रहे, लेकिन जो सही मायने में कैंपस छोड़ के वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचे होंगे, उसी को कहा जाता है प्रतिभा। वो चुप नहीं हुई। 25 साल पहले जो सरकारें आज भी सोचना संभव नहीं होता है, वो एक व्यक्ति करके ऐसा करता है कि मैं भारत भ्रमण करा, ट्रेन बुक करना, 500 लोगों को चयन करना और उनको पूरा शायद 1 महीने लगा, 22 दिन। आज के दिनों में पति पत्नी को 2 पीढ़ी रहती है, 4 को 2 पीढ़ी, बच्चे तो आपसे दूर रहते हैं और आज आते हैं, देखो हमको बहुत तनाव, हमारे मेंटल हेल्थ इशू है। कोरोना में 2 साल हम सब रहे इकट्ठा, सभी के घर में घर की कहानी है। गांव की जो जिंदगी था, 7:30 बजे अंधेरा हो जाता था, 8 बजे तक तो गांव सो ही जाता था, भोर 3 बजे से काम धाम शुरू हो जाता था, फिर शाम को 6-7 बजे तक दुनिया खत्म हो। तब शायद लोग जबरन 12 घंटा एक आंगन में रहते थे, लेकिन वो जैसे जैसे हम आधुनिक बने, बिजली आई, मास ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, पढ़ाई का आवश्यकता हुई, और बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाना करके बहुएं को, माता को छोड़ के घर आ गए। तो घर अलग प्रकार के बनना शुरू हुआ। प्रकृति माता ने इस बार कहा, चलो अब इस बार ट्रेनिंग दो। 2 साल सबको लॉकडाउन में इकट्ठा रखा। तो उस समय में जब हमारी अनुभव हुई कि हम अपने परिवार को लंबे समय इकट्ठा रहना क्या क्या चुनौती किया, उतने में सरकार जी ने 25 साल से इतने लोगों को इकट्ठा ट्रेन में घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं, ये अपने आप में उपलब्ध है। तो मैं पढ़ने में समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की मेरे को दायित्व दिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की।
मटेरियल डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, थोड़ा पेट्रोलियम में नमी आएगी और फिर हो जाएगा। उस विभाग में काम करते करते मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मैं आज की इस किताब विमोचन में उसको कहना चाहता हूं। भ्रमण से क्या होता है? दिखने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से भी बढ़ता है, लेकिन उसको देखने से अनुभव भी बढ़ता है। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं जिसे कहा, लेकिन मैं पेट्रोलियम सेक्टर को 8 साल काम करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट किया था, समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया था। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल से थोड़ा जानकारी मेरे को होती है। विश्व की अर्थनीति कैसे चलते हैं, विश्व की देनदारी कैसे होती है, देशों की बजट कैसे बनते हैं और सरकार खर्चा कैसे करती है, कहां से पैसा आता है, कहां से ज्यादा आ सकता है, कैसे उसको बचत किया जा सकता है, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाखों करोड़ रुपया की बचत हो सकती है टेक्नोलॉजी को लगाने में, अर्थनीतिक सुविधा कैसे हो सकती है, उसका मैंने अनुभव किया, पढ़ के नहीं देखने के कारण, नजदीक से समझने के कारण। मैं हाइड्रोकार्बन को यानी कच्चे तेल को दरिया के नीचे और भूमि के नीचे हजारों मीटर नीचे कैसे उसको ढूंढना, कैसे उसको उत्तोलन करना, कैसे उसको रिफाइनरी में प्रोसेसिंग करना, फिर उसको लॉजिस्टिक के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके डिपो तक ले जाना, डिपो से गैस स्टेशन पेट्रोल पंप तक ले जाना, फिर उसमें से कंज्यूमर तक देना। इसमें से 4-5 ज्ञान मेरा हो गया, जो फिजिक्स की थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, मेटेरियल साइंस की थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग की भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की थोड़ा ज्यादा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत हो गया, और मैं मार्केट मैनेजमेंट की थोड़ा बहुत समझ लिया। यानी मैं 4-5 डिग्री की जितनी पढ़ाई होती है उतना पढ़ाई मैंने पिछले 8 साल में कर लिया। ये तब संभव हुआ मैं प्रत्यक्ष जाके उसमें खड़ा होकर नजदीक से देखने का मेरे को सौभाग्य मिला। जिन बच्चों को आपने पिछले 25 साल में भारत दिखाया, भारत की आत्मा को दिखाया, भारत की भाषाओं को दिखाया, भारत के प्रांतों को दिखाया, भारत की खान पान को दिखाया, भारत की पौधे को दिखाया, पेड़ को दिखाया, जलपथ को दिखाया, मौसम को दिखाया, ये अपने आप में एक अत्यंत प्रशंसनीय काम। हमारी नौजवानों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है उनको मौका है, आवश्यकता है मौका देने की जिनके पास जिम्मेवारी है उनको कम से कम बाधा न दे। कभी कभी मैं सरकार में काम करने के उपरांत मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी शुरू में हम लोगों को कहे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, जो समझ में आया वो क्या होता है। बाद में जब उसको गहराई से उनसे समझे, उसको अनुभव किए, मैं मेरे तरीके से आपको कहता हूँ, जरूरत नहीं को अन्यथा नहीं कर रहा। मेरे समझ की सरकार कम से कम लोगों की जिंदगी को दर्शना बढ़ाए, सरकार लोगों की जिंदगी से दूर रहे तो लोग अपने आप में कर लेंगे। जो सरकार कर लिया ना, टूरिज्म का भी काम किया, ओपन यूनिवर्सिटी का भी काम किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम किया, कई सारे चीजों को इकट्ठा कर लिया। मित्रों, इसी को ओपन लर्निंग कहा जाता है। आपने तो यूनिवर्सिटी चलता बोलता है, मोबाइल यूनिवर्सिटी बना लिया और आप आगे जाके आपके गांव में देवरिया की आपके गांव को एक संकेत ही माना। भारत के हर एक गांव में 5 प्रकार की विद्या है जो IITs में पढ़ाया जाता है। लोहार है, मेट्रोलॉजी पढ़ाया जाता है, कुम्हार है, यानी वो भी एक मटेरियल साइंस है, खेती होती है, फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर एंड एग्री प्रोसेसिंग,
दोनों गांव में होता है। जो गंगा की हमारी मिसाइल होती है, गुड़ निकलता है, वो सारे को प्रोसेसिंग सारा विषय को गांव गांव में आज आवश्यकता है आधुनिक तरीके से उसको कैसे स्थापित करना। तो एक देश तब बढ़ पाएगा, एक देश तब बढ़ पाएगा जब उस देश की नागरिक आर्थिक संपन्नता से स्वावलंबी होकर आगे बढ़ेंगे। कैसे होगा? सभी लोग अगर सोचेंगे कि मैं किसी के वहां नौकरी करूंगा, रोजगार उसी में मेरे को मिलेगा, एक देश बड़ा नहीं बन जाएगा। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग अपने बुद्धि को उपयोग करके दूसरों के लिए सेवा करेंगे, वो सर्विस इंडस्ट्री डेवलप होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने संसाधनों को उपयोग करते हुए उत्पादन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुगुणित करना पड़ेगा, तब उसी में से संपन्नता और संचालन बढ़ेगी। हमारी देश ऐसा कभी था 200, 300, 400 यूरोप में कोई भी इतिहास को पढ़ो तो 300, 400, 500, 800, 1000, 1200 के ऊपर पाश्चात्य देशों के इतिहास को ढूंढने में साहित्य का मिलता है। होगा हम उस विभाग में क्यों जाए, उनका नहीं था, लेकिन साहित्य नहीं मिलता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया विश्व के दो छोर में दो बड़े देश हैं, दोनों के इतिहास 200 से 300 साल, 300 साल दोनों डेवलप देश बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई। हम सभी के सामने एक मॉडल खड़ा है। इस प्रकार की अभी प्रधानमंत्री जी ने और एक बात इस बार हम सबको कहिए 5 प्रण कराते हुए कि मित्रों, आज भारत में हम सभी लोग ज्यादातर चिंता होते हैं मेरे अधिकार का क्या होगा, मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल सकता है, मैं टैक्स देता हूं, चाहिए टैक्स आखिर हम देते क्यों है? अधिकार को लेकर हम चिंतित है। मित्रों, अधिकार तब सुरक्षित होगा उसके लिए कोई जिम्मेवारी लेगा, तो कोई अपना ड्यूटी करेगा। तो सीमा में -डिग्री में सैनिक पहरादारी करते हैं, इसीलिए हम चैन की नींद सोते हैं। हमारी गली में रात को बहादुर पहरादारी करता है, तो हम निश्चित रूप से घर में सोते हैं। ये जिम्मेवारी लेगा तो समाज सुरक्षित होगा। आज ये जिम्मेवारी संवाद सृजनशीलता की एक प्रयोग हमारे सामने है, इसको मैं शुभेच्छा देने के लिए आया हूँ। ये किताब बहुभाषी हो, ये आया सर्वव्यापी हो, एक शशांक मणि नहीं, जिसमें लाखों शशांक मणि अपनी जिम्मेवारी को लेकर बढ़े। उसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को ये धन्यवाद देता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत धन्यवाद। In summary, I would like to just inform you that detailed discussions on the upcoming elections in different states, especially the state of Meghalaya, Nagaland and Tripura, were discussed in detail, and the National Committee has empowered the Central Executive Committee of the party, which is the cabinet of the party, to take the decisions in regards to the immediate formation of the election committees for these 3 election-bound states. The NPP, as always, has decided that we will contest these elections and also look at other states where elections are coming, and the Central Executive Committee, as I said, has been empowered by the National Committee to take the decisions in these regards. Other important matters related to the organizational aspects of the party were also discussed. And as you are aware, that the National People's Party is one of the few parties that has achieved national status within a very, very short period of time. And the response that we're getting from different parts of the northeast part of India and the rest of India
is also something that is very encouraging, and hence the party has decided that we will continue the expansion of our state units in different parts of the country also. Other matters were discussed which were more of finance, accounts and organizational matters, which I feel need not be discussed in the press conference. But if you have any questions, I'll be happy to answer those questions. Thank you. We have been very clear from day one that in the Meghalaya elections, it is not just the BJP, but we will not be going into coalition with any of the political parties, including the ones with whom we are in coalition right now. So there is no political understanding or no political pre-poll alliance, I should say. There is no pre-poll alliance with none of the political parties, which obviously also includes BJP. Sir, so that means then how should we see your relationship with NDA? Are you part of NDA or you are? We have always supported the NDA. I have always maintained that contesting an election is about the identity of a political party. When the elections are over and political situation requires one to form a coalition government, then in that case the political part of the election comes up, and that's when we decide, or we have decided in the past, that whenever situations arose, we supported the NDA or we worked with the NDA to form the government. But contesting an election, as I said, has always been about the ideology and the identity of the party, which will always maintain. Mr. Sangma, your presence. It's like JDU, Shiromani Akali Dal, Shiv Sena. How do you see this? Do you think NDA is Political changes and and transitions and transformations take place all the time. So it's nothing new. And the relationship between BJP and the other political parties is something that I don't feel I should comment on, because those are understandings between them. But as I said, from our point of view, we have maintained two simple principles. The first principle is that when we fight an election, we fight on our own, because it's about the identity and the ideology of the party, which we tell the people about, and we expect that people will vote for us. And the second ideology which we have maintained in the past is that we have normally worked with the NDA in all areas, and that has been the kind of principle that we have followed, and this has been something that even our leader, our founding leader, P.S. Sangma, who had always supported the NDA. Mr. Sangma. No, number one, I think it's important to know that problems are always there in coalition. So it's not that problems are not there. So one should not be surprised. But we have decided that we are in coalition with them from a political angle. And obviously we will work with them in different situations. But when it comes to different and specific issues that are there, we are not, we don't shy away from those issues. And whenever we find that there is a situation where we need to take a stand, even though it may be against the more general principle of the NDA, we have not shied away as a party to take our independent and individual stand, and we continue to do that, keeping the interest of our people in mind. Mr. Sangma, your presence in you are present in Gujarat. Will you be contesting election in Gujarat as well, or you will still assessing your party's position there? Yes, we are assessing. We are present out there in many other parts of the country. But our presence is one part, and obviously contesting an election requires you to have a much more stronger as well as organization as well as candidates to be coming in. So we will assess the situation, and if we find that there is an opportunity for us to enter the electoral politics and contest elections, definitely we will look into that. So there is allegation from the opposition party. Sorry? In Meghalaya? The way I see it is that that there was a political space in the opposition, and that space is kind of going away from the primary opposition there, which was the Congress. And when that situation happened, the Trinamool has come in and tried to capture that space. While they try to do that, they have led to the opposition being fractured even more.
And though they managed to capture some space in it, now within the space of what Trinamool had got, they are now creating another space within themselves. So there's further fraction that's going to take place, or is taking place. So hence, though they have come in and a lot of noise is being made, it's not very simple to come in and make a grid and get a hold in situation just in a matter of days. It's not as simple as putting up a lot of banners and posters and flags. It's much more complicated than that. Sir, there is allegations from the opposition parties that wherever the BJP form the government in the coalitions, and they are trying to finish the smaller party. In case of Bihar and other states. So what do you take on this, sir? No, as I said, those are internal matters of the BJP with the coalition partner there. If you look at what happened in Maharashtra, it was the opposite. So they tried to fight and then break away with Mr. Uddhav Thackeray, but then later on they got back with Mr. Shinde. So I guess it's a matter of situations that are there. It's not always that that's the rule. But when it came to our own state in Meghalaya, we did not face any such problem. We had some situations in Manipur, and we did not shy away from making that an issue, and we stood up in our stand and took up the matters with the senior leaders of the BJP. So there are complications which are always there in coalition. So in case of state elections, you are not aligned with the BJP, but when it comes to national elections, I mean the general election of what will be your position? Same or? We have not taken a decision on that. So once the Meghalaya elections and the elections in Tripura and Nagaland is over. No, in fact, the regional politics will have to be seen. In certain areas, the fight will be with Trinamool. In certain regions and certain areas, the fight will be with other political parties. Do you see a revival for the Congress party, especially in Meghalaya and the other regions? I think you can answer the question better than me. I think we are seeing the situation that's happening throughout the country. I'm not trying to look at them in any wrong way, but these are facts in front of us. I don't think it's hard to read into it. That situation is very tough. So I don't think, at least coming into Meghalaya, even as we speak, more and more leaders from the Congress are today joining the National People's Party in the state of Meghalaya also. So situation is not good for the Congress right now, and I don't think there's a question of revival at this point in time. Mr. Sangwa, one last question. Assam and Meghalaya have seen some sort of tension in last few months and years. The discussions are on between the two states. What is the status that? And how border issue? Yes, please. Okay. So yes, the tension for the border has been there for a very long time, and precisely because the fact that these have led to people suffering, the two governments along with the MHA have decided that we need to find a solution to this. And I'm happy to tell you that we are moving in a positive direction, and both the states governments and the central government are positively moving on it and trying to keep the people's mandate and the people's will as the top priority during the discussions. The first phase, the MOU has been signed. We are hopeful that we'll be able to move forward positively in the second phase also. And this is something that we are very firm on because we believe that this has not been done for 50 years. But there is no reason why it should not be done, and people have suffered. But we are committed that we will find a solution to the second phase.